Good morning, students, and welcome back again in online classes. I hope all are good and healthy at homes. So, students, before I start the chapter which is going on, first I recall the topics which we have learned in this chapter. Okay. So, students, in this chapter we have learned about two types of functions. Number one type of function. One type of function means a function is said to be one if every preimage has its unique image. Okay, and the second type of function is onto type of function, and a function is said to be onto if every image has its preimage. Okay, so these two types of functions which we have discussed in this chapter. Now students, I am going to solve third question of exercise 1.2, in which a function is defined from real number to real number given by fx equals to bracket x. And students, here this representation of a function is called greatest integer function. Okay, now students, the value of greatest integer function will always be an integer. Okay, means greatest integer function will always give an integer, means bracket x that represent greatest integer function, and its value will be less than or equal to x. Less than or equal to x means, students, for example, if we have a greatest integer function, if we want to find the greatest integer function of 1.2, then we have to take the value which is less than 1.2, and that is an integer, means that is 1. 1 is the integer which is less than 1.2. If we have greatest integer function of 3, then we will take exactly 3, because 3 is an integer. So in that case we will take the value which is equal to x, means that is equals to 3. Okay, now to check whether the function is 1 or not. Now students, we know that to check the function is 1 or not, first we will take f x1 equals to fx2. If we get x1 equals to x2, then we can say function is 1. So if we are taking fx1 equals to fx2 in the given function, we get fx1 equals to bracket x1. Okay, fx2 equals to bracket x2. Means if the greatest integer function for x1 equals to greatest integer function of for x2 are equal, then can we say x1 equals to x2? No. If greatest integer function for x1 and greatest integer function for x2 are equal, then we can't say, then it is not necessary that x1 and x2 are equal. Why? So for this, to explain why we are saying x1 and x2 are not equal, we have to explain it with an example. So students, here you can see that two greatest integer functions are equal. Okay, for values x1 and x2, and x1 and x2 are real numbers. So students, अगर दो greatest integer functions equal हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि उन greatest integer functions की values भी equal है, means उनके domains भी equal हैं, x1 और x2. For example, if we take the greatest integer function of 2.1 and 2.3, so their greatest integer function will be 2, because 2 is the integer which is less than 2.1 and 2.3 according to the definition of greatest integer function. So यहाँ पर 2.1 की भी जो greatest integer function value होगी 2 होगी, और 2.3 की भी 2 होगी, बट जो हमने डोमेन पुट किए हैं इन फंक्शंस के अंदर वो हैं 2.1 और 2.3, जो कि आपस में इक्वल नहीं है. सो वी कैन क्लियरली कैन से दैट function f is not 1. Now for onto, students, we know that a function is said to be onto if every image has its preimage. But here for the given function, every image has not its preimage. Now मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि हर एक image की preimage नहीं है? Students, according to the function which is given in this question, fx equals to greatest integer function, means as I told you कि इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा हमें एक इंटीजर मिलनी है, मीन्स फंक्शनल वैल्यू जो होगी, जो इमेज होगी, दैट विल बी एन इंटीजर. अब जो हमारे डोमेन और कोडोमेन है, दे आर रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स. सो यहाँ पर अगर हम कुछ रियल नंबर्स डोमेन में लें आर, और कोडोमेन में भी कुछ रियल नंबर्स लें, जैसे 1.0, 1.1, 1.2 अप टू 1.3, 1.4, लाइक दिस 3, 4, तो 1 की जो फंक्शनल वैल्यू होगी, अगर हम x की जगह 1 पुट करें, एफ एक्स इक्वस टू 1, 1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू 1 ही आएगी ना. 1.1 की क्या आएगी? अब x की जगह अगर 1.1 पुट करें आप, तो 1.1 अगर हम ब्रैकेट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1.1 लें, दैट विल बी 1, बिकॉज we have to take a value which is less than 1.1 so that
इट विल बी एन इंटीजर। तो वन वैल्यू जो होगी 1.1 से छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी ताकि वो इंटीजर बन सके, बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो उसकी वैल्यू तो ऑलवेज इंटीजर ही आनी है। तो 1.1 की इमेज भी 1 ही होगी। सिमिलरली अगर हम x की वैल्यू 1.2 पुट करें, अगेन वी विल गेट 1, 1.3 पर 1, 1.9 पर 1। ओके, सो फॉर ऑल दीज प्रीइमेजेस वी हैव अ सिंगल इमेज 1। नाउ क्या 1.1 के लिए कोई प्रीइमेज एग्जिस्ट करेगी? नो, बिकॉज यहाँ पर कोई भी हम वैल्यू पुट करें हमें तो केवल इंटीजर मिलना है, मीन्स यहाँ केवल इंटीजर के लिए ही प्रीइमेजेस एग्जिस्ट करेंगी। ओके, बट किसी भी डेसिमल इमेज के लिए कोई भी प्रीइमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि कभी इसका आंसर यानी जो इमेज आनी है, इमेज मीन्स फंक्शनल वैल्यू, कभी भी डेसिमल आएगी ही नहीं, बिकॉज वो तो हमारा क्या है, इंटीजर फंक्शन है, वो तो हमेशा एक इंटीजर देगा। सो फॉर डेसिमल रियल नंबर्स, फॉर डेसिमल नंबर्स और वैल्यूज, नो प्रीइमेजेस विल एग्जिस्ट इन डोमेन। ओके, यानी डेसिमल एक्सप्रेशन के लिए कोई भी प्रीइमेज इस डोमेन, इस सेट में एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कई सारे एग्जांपल्स के थ्रू ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सभी इमेजेस की प्रीइमेजेस एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। सो विथ एन एग्जांपल वी कैन एक्सप्लेन, इफ़ यू टेक एन इमेज 1.5, इमेजेस ऑलवेज बिलोंग टू कोडोमेन। सो 1.5 इमेज के लिए हम कह सकते हैं कि देर इज़ नो प्रीइमेज। ओके, सो फॉर द इमेज 1.5 देर इज़ नो प्रीइमेज। फॉर इमेज 1.1 there is no preimage. For image 1.9 there is no preimage. So there are so many examples by which we can explain why the function is not onto. Okay.